So once again, welcome to this daily live session of Unacademy CAT. My name is Ronak Shah, and in this session we are once again going to continue with permutation and combination. So in the previous few sessions I had briefed you about the basic concepts of permutation and combination. In case if you missed those sessions, please watch all the previous videos. They are available in the playlist. That would be really great for you. So let's begin with the session, and quickly show me a thumbs up if I'm audible and all of you are ready to go. Yes, so I can see many students. Come on guys, quickly show me a thumbs up. Great. So good to see all of you. So let's go ahead. Guys, there is a scholarship test that is coming up in the form of Unacademy Combat. So you participate in this contest and you stand a chance to win the Unacademy subscription and another prizes. Right, so these are the few advantages of this particular contest. It's free for everyone, so you can download Unacademy Learning App and you can also participate in this. In case if you download the app for the first time, so use this code CHAT10 to unlock it. Right, so please go ahead and win this prizes. Yeah, hi Sumit and everyone else. So in case if you are new to my sessions, this is a bit about myself. Quickly take a glance at my profile and keep learning, guys. Make sure that all of you have subscribed to this particular channel, which is India's best online learning platform for CAT and Other MBA Entrance Exam, and also be part of my Telegram group. The link has been provided in the description. If you want to write anything to me directly, you can ping me on this Telegram ID Ronak_live. Okay, so here is a question to begin with. Please give a try and tell me the answer. This is something that ideally you should know, you should remember well in advance. The question is how many squares are there on the chessboard, and most of all of you know that chessboard is 8 x 8, but the number of squares are not 64. Please understand, 64 are the squares of the size 1 by 1. So 1 by 1 squares, they are 64 in number. So same way you have 2 by 2 squares, 3 by 3 squares, and so on and so forth up to 8 by 8 squares. So how many squares are there in total? Come on guys. Yes, hi Devendra, hi Rohit, good evening guys. Let's get going. And yes, if you are enjoying my sessions, if you are liking this video, then of course press the like button and share it with your friends also. That's the ritual that we follow. Hi Sumit, I'm good. Devendra, how are you? How's your weekend, all of you? Did you have some good luck on this Valentine, or it continued the same way as it has been in the past? Okay, great. Chalo, tell me the number of squares on the chessboard. What will be your answer? Okay, hi Manju, hi Pranav. Good to see all of you, and great evening. So the question is, on a chessboard, how many squares are there in total? As I mentioned, you have Acha. Okay, Sumit is asking what even is this Valentine? Oh Sumit, इतनी बुरी हालत है. Are you a mechanical engineer? Okay. So guys, yes, there are total 204 squares. Okay, there are total 204 squares. So let's understand, how do we get this answer 204, everyone? So as I mentioned, you have, right, you have 1 by 1 squares on the chessboard, then you have 2 by 2 squares. So this kind of squares you have 64. Right, if I look at 2 by 2 squares, so how many 2 by 2 squares will I have? So guys, it's very easy to understand. This is 1 square, then this is 2nd square, then 3rd square will start from here, 4th, 5th, 6th and 7th. So in one row you will have 7 square, in one column also you can say there will be 7 square. So total number of squares will be like 7 into 7, that is 49. So this is 8 square, this is 7 square. Now you can easily make out the pattern. 3 by 3, if you check, there will be 36 square, which is nothing but 6 square, and so on and so forth. 8 cross 8, you have just 1 square, that's a large square. Okay,
the largest square you can say, which is equal to 1 square. So actually you need to find out sum of these numbers. 1 square plus 2 square plus 3 square up to 8 square, right? So this is how you can calculate, guys. So what will be sum of this square of first n natural numbers? So let me quickly give you the formula, guys. This is called sigma n square, where n will be equal to 1 to n, right? Or you can say sigma x square, whatever you want to write. Okay, normally we write sigma x square, where x will be equal to 1 to n. But this indicates 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. Or you can also call it sum of square of first n natural numbers. So guys, this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So this is the formula to find out sum of square of first n natural numbers. Is that clear? Remember this formula. जैसे अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फाइंड करना है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? n इंटू n प्लस 1/2. सेम वे अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. तो इसमें अगर मैं n का वैल्यू 8 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे 1 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर का समेशन फाइंड करना था जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें. सो वैल्यू क्या आएगा? 8 × 9 × 17 डिवाइड बाई 6. So this is nothing but 204, and that's why we have total 204 squares. Is that clear, everyone? Come on, show me a thumbs up quickly so that we can go ahead with the next question, next part. Yes, great. Chalo. So guys, the answer for this one is 204. I'll also give you one more chessboard question, but before that, guys, look at my schedule for the coming week. This week rather, we'll have sessions over here. This QA basics, I have conducted a poll on the group, so based on the response of the students, we'll decide whether to continue with QA basics or not. But yes, from tomorrow, that is Tuesday, I'll be conducting some LRDI sessions on Unacademy Learning App also, and the plus batches are going on, guys. And this week I'm traveling on Thursday and Friday, so there will be lesser number of session. There will be no session on Thursday, and Friday also there will be lesser number of sessions. So please try to learn with me as much as possible tomorrow and day after, and of course today. So let's utilize this 3 days time, and then there will be a small gap because I am traveling. Yes, you can definitely go for plus batches. As you know, do not forget to use my code CHAR10, and these are the subscription plans, so you can choose the plan as per your convenience. And yeah, the last few days are left for this limited period 10% discount. It has been going on for quite some time, so please quickly use this code and go for the plus subscription for 1 or 2 years. And for any other course also, you can still use my code CHAR10. So keep learning, guys. Now let's take one more question from chessboard, everyone. Yeah, Rohit. We'll try to do that, but looking at the attendance for a couple of days, I mean, it looks like very few students are interested, so we'll see. Okay, if everyone is attending sincerely, so definitely I can continue. Okay, Quant 2 p.m. Yeah, fine, guys. So please try for this question, everyone. In how many ways can we place 2 kings on the chessboard such that they attack each other? The kings should attack each other. You need to calculate the number of ways. Guys, let me tell you, in the past CAT papers, slightly I can say before 2015, there have been about 4 to 5 instances where they have asked chessboard questions, but in last few years they haven't asked a single chessboard question for some reason in permutation combination. So actually the chances of chessboard questions coming in the 2021 CAT are increasing. It has increased rather. Okay. Are you getting this point, everyone? So आप लोग चेसबोर्ड में इतने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. बट यस, आपको ये नहीं पूछेंगे कि नाइट को कितने वेज में रख सकते हैं, क्योंकि नाइट का बहुत ही ऑकवर्ड सा पैटर्न रहता है मूवमेंट का. बट आपको रुक पूछ सकते हैं, किंग पूछ सकते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. प्लीज गिव अ ट्राई फॉर दिस. हाँ, मतलब किंग कैन अटैक ईच अदर. बाय द वे, तनिष्क, of course. So when there is a king over here, say k1 is over here and k2 is over here,
Can you move k2 over here? No, you can't move. Do you understand why can't we move it over there? Right? Because there is one king over here. Are you getting this point? Yeah. So don't go by the chess game. Just identify the positions. Right? Is it clear? Okay, guys, chalo, think about the number of ways of putting them. Of course, you can also find out number of ways in which they do not attack each other, right? That will become a different question. So guys, क्या कर सकते हैं? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि the first king can be placed over here? Yeah, hi Nikhil. Right. First king can be placed over here and the second king can be placed in any of these 8 squares. मतलब आप अगर सेकंड किंग को यहां कहीं पे भी रखोगे तो ये किंग उस पर अटैक कर सकता है ना? नहीं, इतने कम तो हो ही नहीं सकते ना तनिष्क. सो गाइस, फर्स्ट किंग k1 को आप कितने वेज में रख सकते हो? यू कैन प्लेस इट ऑन एनी ऑफ द 64 स्क्वायर्स एंड द सेकंड किंग हैज टू बी केप्ट इन द एडजेसेंट स्क्वायर. आपने फर्स्ट किंग को यहां रखा तो सेकंड किंग हैज टू बी kept in adjacent square, so 8 square. Can I say this will be the answer? Is this correct, guys? Yes or no? jaldi se batao, is this correct? Avyav is saying 588. Avyav, isse zyada to ho hi nahi sakta na. The number of ways can't be more than this. 64 into 8. 64 into 8 कितना आएगा? So it will be 512. 512 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. Right, so what is wrong in this, guys? What is wrong in this? Yes, exactly what Sumit Nandi mentioned, guys. If the first king is somewhere in the middle squares, then the second king can be placed in any of the 8 square. But what if the first king is over here? What if the first king is over here? Then for the second king, you have just 3 squares. Are you getting this point? Same way, what if this first king is over here? Then for the second king, you have just 5 squares and so on and so forth. So you will have to segregate the cases. But please understand, total number of ways will surely be less than this value. ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा? 512 आएगा, तो इससे तो कम ही आएंगे. टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 512 से कम आएंगे. करेक्ट? सो अब कितने वेज में करेंगे ये? कितने वेज में करेंगे इसको? चलो जल्दी से. सो गाइज, यहां पे आपको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना? ये समझ में आ रहा है सबको? यू विल हैव टू क्रिएट इनफैक्ट 3 केसेस. केस 1, where your first king is any of the center square. Your first king is at any of the this squares. मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 3 रीजन में डिवाइड कर देता हूं रादर. ये 36 में से कोई भी एक जगह पे है फर्स्ट की, राइट? सो k1 के लिए यहां पे हो गया 6 into 6 36 स्क्वायर्स. सी मैंने क्या किया, एजेस के स्क्वायर्स एक्सक्लूड कर दिए. एजेस वाले स्क्वायर मैंने एक्सक्लूड कर दिए. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स एम आई लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ 36 स्क्वायर्स. So the first king can be placed on any of the 36 squares and the second king can be placed on in that case, suppose आपने first king यहां पे रखा तो second king को आप कितने वेज में रखोगे? 8 वेज में रखोगे. क्या ये समझ में आ रहा है? So total number of ways will be 36 into 8. What is 36 into 8? 288. This is case 1. Now what will be case 2, guys? So the case 2 will be फर्स्ट किंग इज समवेयर ऑन द स्क्वायर्स ऑफ एजेस. ये जो एजेस है बट कॉर्नर के स्क्वायर छोड़ के एजेस वाले स्क्वायर पे है. तो फर्स्ट किंग को आपने इसमें से कोई एक स्क्वायर पे रखा. सो देयर आर सच 24 स्क्वायर्स. इन दैट केस सेकंड किंग कैन बी प्लेस्ड इन 5 वेज. डू यू एग्री विद दिस? देखो, अगर मैंने फर्स्ट किंग को यहां रखा तो सेकंड किंग को आप कितने वेज में रख सकते हो? 5 वेज में रख सकते हो ना. सो ये कितना हो जाएगा? 24 into 5, दैट इज 120.
and there will be third case. The third case will be the first king is in the corner. Okay, case 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ case 3 that the first king is kept anywhere in the corner. So there are 4 corners. So the king 1 k1 can be placed in 4 ways, and the second king can be placed in any of the 3 ways. I mean, it can be placed in any of the 3 square adjacent to that corner square. So this will come out to be 12 ways. So total number of ways will be in which they'll attack each other. So it will be 12 plus 288 plus 120. So guys, ये कितना हो जाएगा? 420 is the correct answer. Yes, Priyansh, that's correct. 420 is the correct answer. Guys, have you all understood these 3 cases? Oh, no, Avyav, they'll not be multiplied by 2. The simple reason, it's a very common confusion. हमने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कहा कि first king यहाँ पे, second king यहाँ पे और vice versa? Because that is taken care. See, if you observe, Avyav, look at this. The first king you are keeping on any of the 64 squares. 36 plus 24 plus 4. You are putting first king on any of the 64 possible squares, and accordingly the second square will, the second king will be arranged. So all the cases are covered. Are you getting this point? Yes, please understand the kings are always different and the squares on the chessboard are also different. Guys, remember this point. The kings are always different as well as the squares on the chessboard are also different. है ना? Square भी chessboard पे अलग होते हैं. Hi Priya. Okay. Right, so I'm sure all of you have understood this question. Try for this one more question, guys. Hi, good evening. Now there are 7 tasks. Look at this question, everyone, give a try. There are 7 tasks which have to be done by 7 people, A, B, C, D, E, F, G. Each person can do only one task. Task 1 must be done by A, B or C. Task 4 and 5 cannot be done by either F or G. So in how many ways can the task be accomplished? Guys, this is a nice question. In fact, it's a CAT PYQ by the way. तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे भी जा सकते हैं. आपको बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. So everyone, please try your answer. Please type your answer in the chat box. Okay, we have Kishan who is saying option C. What about others? Let me just mention those tasks. Let's call it task number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and the people that we have are A, B, C, D, E, F, G, H. Come on guys, give a try. मैंने आपको रूल सिखाया है. See, now this question can simply be solved by counting principle. In fact, even the chessboard question, did we use anything called permutation or combination to solve them? No. So even this question can be easily solved by counting principle, right? So think simple in a simple way and try to figure out the solution. Remember those 2 conditions, constraint वाले जो मैंने 2 point बताए थे कि whenever there are constraints for any position,
when you are finding the number of ways to fill certain position, if there are constraint, there are some condition, so first calculate the number of ways to fill the condition. उसमें भी पहली कौन सी कंडीशन फिल करेंगे? पॉजिटिव. फिर कौन सी करेंगे? नेगेटिव. तो यहां पे लिखा है टास्क 1 मस्ट बी डन बाय ABC. तो ये टास्क ABC में से ही कोई कर सकता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रेंट. इसको इस पोजीशन पे यही लोग आने चाहिए. टास्क 4 and 5 कैन नॉट बी डन बाय F और G. ठीक है ना, F और G ये नहीं कर सकते. तो मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव कंडीशन. समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये आपका नेगेटिव कंडीशन आ गया. करेक्ट. जस्ट अ मोमेंट. Correct. So answer is definitely 864. Okay, the answer is 864. Right? So guys, सुनो, यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव कंस्ट्रेंट को फिल करेंगे. टास्क 1 कौन करेगा? डेफिनेटली ABC में से ही कोई एक करेगा. सो देयर आर 3 ways. Now understand the number of ways of doing this. In case if you are not able to get it, pay your attention. Task 1 has to be done by ABC. So there are 3 ways to do it, right? Okay. So यहाँ पे suppose मैंने टास्क 1 A को असाइन कर दिया. अब मेरे पास टोटल कितने लोग बचे हैं? 6 ही लोग बचे हैं. ठीक है. ओके. टास्क 4 and 5 F and G नहीं करेंगे, और ऑलरेडी हमने एक ए को टास्क 1 दे दिया है. F and G टास्क 4 and 5 कर नहीं सकते. तो कैन आई से फॉर सपोज इफ आई टेक टास्क नंबर 4, हाउ मेनी पीपल डू आई हैव? तो A यूज नहीं कर सकते, F यूज नहीं कर सकते और G भी यूज नहीं कर सकते. सो आउट ऑफ 7 3 लोग चले गए, तो कितने लोग बचे? 4 लोग बचे. सो एनी वन ऑफ दोस 4 पीपल कैन टेक अप टास्क 4. क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक ट्रिकी पॉइंट था. फिर से एक बार बताता हूं. टास्क 1 हमने A को असाइन कर दिया. टास्क नंबर 4 and 5 F and G नहीं कर सकते. तो मैं अभी टास्क 4 को देख रहा हूं. तो टास्क 4 के लिए मेरे पास FG नहीं है और A जिसको हमने असाइन कर दिया वो भी नहीं है. तो कितने लोग बचे? 4 लोग बचे. सो 4 में से कोई एक टास्क 4 करेगा. सपोज मैंने D को टास्क 4 दे दिया. मैंने D को टास्क 4 दे दिया. अब मेरे पास कितने लोग बचे? 3 लोग बचे, क्योंकि F G A और D तीनों चारों लोग साइड में कर देने हैं. तो बाकी 3 में से किसी एक को टास्क 5 चला गया. क्या ये आपको समझ में आया? टास्क 4 and 5 के लिए 4 and 3 वेज कैसे हो गए? बस ये पार्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो. कम ऑन गाइस, क्विकली. राइट, प्लीज शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. यस, ग्रेट. सो गाइज, ये हमने अब तक क्या क्या किया? टास्क 1 के लिए वेज काउंट कर लिए, टास्क 4 के लिए कर लिए, 5 के लिए कर लिए. अब देखो, सपोज ये 5 हमने दे दिया, सपोज E को दे दिया. सो 3 लोग चले गए, A, D और E चले गए, और हमारे टास्क 1, 4 and 5 असाइन हो गए हैं. नाउ आई हैव 4 टास्क. नाउ आई हैव 4 टास्क and 4 people left. So can I say this 4 people can be assigned on this 4 tasks in 4 factorial ways. So total number of ways आपके कितने हो गए? It will be 3 into 4 into 3 into 4 factorial. Please calculate this. It will come out to be 864 in total. The total number of ways will be 864. Is that clear, everyone? क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sure, fine. Let's go ahead with one more question then. Yeah, this is also a good question. Come on guys, give a thought. अब देखो, ये सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए. थोड़ा सा ट्रिकी है डेफिनेटली.
सुमित directly option B. Any reason? In how many ways can the letters of the word subject be placed in the squares of the given figure below so that no row remains empty? Yes, in how many ways can the letters of the word subject be placed in the squares of the given figure given below so that no row remains empty? गाइस देखो, यहां पे आपको कोई भी रो एम्प्टी नहीं रखना है और यही लेटर्स को अरेंज करना है, करेक्ट? सो आई हैव दिस लेटर्स SUBJECT and how many letters are there? These are total 7 letters, correct? 7 letters. So एक चीज तो पक्की है कि आपका ये रो कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा. The last row will never be empty. So which rows may possibly remain empty? Can I say either this row will be empty or this row will be empty? Guys, do you all agree with this? ये दो में से कोई एक ही रो एम्प्टी रहेगा, करेक्ट? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज दिस, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस लेटर्स माइनस नंबर ऑफ वेज in which some row remain empty, number of ways in which some row remain empty. Do you agree with this? This is how we can solve this question. No guys, answer is not option C. ठीक है, आंसर इज नॉट ऑप्शन सी. तो आप इस तरीके से करोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करो टू अरेंज दिस लेटर्स एंड देन नंबर ऑफ वेज इन विच सम रो रिमेन्स एम्प्टी. तो हमारे कौन से रो एम्प्टी रह सकते हैं? कैन वी से हमारा या तो फर्स्ट रो एम्प्टी रहेगा या तो सेकंड रो एम्प्टी रहेगा. तो बस हमें वो कैलकुलेट करना होगा. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस लेटर्स कैन बी अरेंज, वो मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से एक बार. टोटल वेज, सो वो कितने आएंगे? कैन आई से 7 लेटर्स कैन बी अरेंज ऑन दिस 9 पोजिशंस in 9p7 ways minus number of ways in which some row remains empty. ठीक है, so number of ways in which rows remain empty, तो वो कितना होगा? तो अगर हम देखते हैं, नहीं रोहित सिंह, 9p7 होगा. अरेंजमेंट है, यू आर अरेंजिंग 7 लेटर्स ऑन 9 पोजिशंस, सो इट विल बी 9p7. ठीक है, और अभी अगर सपोज मैं ये रो को एम्प्टी रखता हूं तो कहने से मैंने सारे लेटर्स को यहां अरेंज कर दिया, SUBJECT. ठीक है, तो ये 7 लेटर को, ये 7 पोजीशन जहां पे मैंने रखा है, कितने वेज में कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल वेज. सेम वे अगर मैं ये रो को एम्प्टी रखता हूं तो मैंने सारे लेटर्स को यहां अरेंज कर दिया, तो ये और 7 फैक्टोरियल हो गया. तो मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 2 हो गया. यहां पे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 वेज हो गए. तो हमारा आंसर ये आएगा 9p7 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2. ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो 9p7 क्या होता है? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2. ओके, 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो ये 7 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लो तो क्या आ जाएगा आपका? 7 फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 9 8 जा 72 बाई 2 36 माइनस दिस 2. तो ये कितना आ गया आपका? 34 इंटू 7 फैक्टोरियल आ गया ना. तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी, 34 इंटू 7 फैक्टोरियल. ठीक है एवरीवन? हाँ, मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया?
मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया दोस्तों, दो केसेस बन रहे, केस 1 फर्स्ट रो एम्प्टी, तो उसके वेज कितने हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, और केस 2 जिसमें सेकंड रो एम्प्टी रहता है, सेकंड रो एम्प्टी, तो उसके भी 7 फैक्टोरियल वेज हो गए, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, दैट इज 2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है सबको? Everyone, have you all understood this? Great. Chalo. Fine. So now we are going to discuss a very important point, combinations. Okay, we are going to discuss combinations. Okay, combinations means grouping, guys, also called selection, where order doesn't matter. See, permutation क्या था? Permutation मतलब arrangement था जिसमें order matter करता है. कॉम्बिनेशन क्या है? ग्रुपिंग है, सिलेक्शन है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी वांट टू सेलेक्ट और मेक अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज आउट ऑफ 3 बॉयज। आपको 2 स्टूडेंट्स की एक कमिटी बनानी है, एक टीम बनानी है, राइट? ओके, सो आप कौन सी टीम बना सकते हो? ए बी की टीम बना दो, ठीक है, आप ए बी की टीम बनाओ, या आप ए सी की बनाओ, या आप बी सी की बनाओ। अब अगर आप बी ए की टीम बनाते हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था, इनफैक्ट हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था, राइट? सो इन जनरल गाइज रिमेंबर दिस थिंग, इन जनरल आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एनसीआर बेस। एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करना है या आपको ग्रुप बनाना है तो वो एनसीआर वेज में करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशंस ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर वो हम कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो। देखो, अगर मैं कहता हूं 10p2 तो आप क्या करोगे, 10 को 2 स्टेप पीछे तक लिख दो, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दो, राइट? तो आप ऐसे 10p2 फाइंड कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं सपोज 8p3 तो 8 को 3 स्टेप पीछे तक लिख दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख दो। ये जो होता है वो यहां पे एज इट इज फैक्टोरियल लिख दिया, राइट? सो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बट उसकी जगह पे अगर आपको 10c2 फाइंड करना है या आपको 8c3 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यही चीज करनी है, ध्यान से सुनो, यही चीज करनी है, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो कर दिया, ठीक है? गाइस सॉरी, हाँ एक सेकेंड वो गलत था, लेट मी जस्ट राइट इट वंस अगेन। हाँ सॉरी गाइस, 10p2 फाइंड करना है तो 10 इंटू 9 लिखो, वेरी सिंपल, ठीक है? अगर 10c2 फाइंड करना है तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दो। सेम वे 8p3 आपको करना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दो। अगर आपको 8c3 करना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर दो। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलो, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनपीआर एनसीआर के। Everyone, yeah, are you all with me? Come on, quickly show me a thumbs up, guys. Come on.